Something is coming. Something hungry for blood. What is it? The Demogorgon! We're in deep shit. I don't know where he is. I'm sorry about everything. That's not Will. Dr. Martin Brenner runs Hawkins' lab. This is CIA-sanctioned research. This where it came from? Yes. And the girl? She can't have gone far. Find her. You're in trouble, aren't you? You know Will? Do you know where he is? Hiding. From who? We're telling your mom. No. I'm Matt Duffer. And I'm Ross Duffer, and we studied directing at Chatham University. We created and show ran a Netflix show called Stranger Things. And directed 60 Days. मैट डफर एंड रॉस डफर, जिनको लोग मोस्टली डफर ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था कुछ शॉर्ट फिल्म्स के साथ। अब वो मिलकर एक स्क्रिप्ट लिखते हैं जिसका टाइटल था ओरिजिन, जो उनके लिए की थी किसी एजेंट को अप्रोच करने की और उसके थ्रू किसी स्टूडियो को, जो कि था वार्नर ब्रोस। वार्नर ब्रोस इस स्क्रिप्ट को अक्वायर कर लेता है हिडन टाइटल के साथ, और ये मूवी बेस्ड थी एक पोस्ट एपोकलिप्टिक हॉरर पर। और ये मूवी डफर ब्रदर्स का एक डायरेक्टोरियल डेब्यू होता है 2015 में, लेकिन वार्नर ब्रोस में कुछ इंटरनल चेंजेस चल रहे होते हैं, जिस वजह से इस मूवी को एक बड़ी रिलीज नहीं मिल पाती। बट उनके इस काम की वजह से एक टीवी प्रोड्यूसर डोनाल्ड डी लाइन, इनकी नजर डफर पर पड़ती है और इसके रिजल्ट में उन्हें वेवर्ड पाइन जैसी सीरीज पर काम करने का मौका मिलता है एम नाइट श्यामलन के साथ, जो कि उनके लिए एक मेंटर की तरह साबित होते हैं। और वेवर्ड पाइन्स की प्रोडक्शन खत्म होने तक डफर ब्रदर्स का मोटिव क्लियर हो जाता है और फिर वो रेडी हो जाते हैं अपना एक खुद का शो बनाने के लिए। अब डफर्स मिलकर स्क्रिप्ट का एक इनिशियल आइडिया लिखते हैं और एक पिच बुक रेडी करते हैं। पिच बुक एक समरी की तरह होती है जो इन्वेस्टर्स की प्रेजेंटेशन के लिए यूज की जाती है, और वो इसे कई सारे केबल नेटवर्क्स को पिच करते हैं, जिन्होंने इसे एक बच्चों की कहानी बोलकर रिजेक्ट कर दिया और ये सजेस्ट किया कि वो एक दूसरी अप्रोच ले, जहां हॉपर एक मेन कैरेक्टर है और टाउन में हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। लेकिन इसके बाद ये स्क्रिप्ट मिलती है डैन कोहेन को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है 21 लैब्स, और फिर वो ये स्क्रिप्ट अपने कलीग शॉन लीवाई के साथ शेयर करते हैं, जिन्हें ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद आती है, और फिर वो इस शो के राइट्स डफर ब्रदर्स से खरीद लेते हैं एक्सेप्ट ओनरशिप, जो कि डफर्स के पास ही रहती है। और ये डील होते ही नेटफ्लिक्स अपना इंटरेस्ट इस सीरीज में दिखाता है। फिर डफर्स नेटफ्लिक्स को शो पिच करते हैं और नेटफ्लिक्स इस शो को एक्वायर कर लेता है एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट के साथ। Well, Netflix, I mean, we knew the minute Netflix was interested because they move fast. Even most places, whether it's Hollywood studios or the other networks, they take more time. Maybe they'll shoot a pilot and then they'll develop it. But Netflix is just like, you know, they, to their credit, they bought into this vision and then they were like, let's go, and they supported it all, you know, to the very end. और किसे पता था ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक और हाउस ऑफ कार्ड्स के बाद नेटफ्लिक्स के लिए सबसे बड़ी चीज होने वाली थी। You know, when we first came up with this idea, we were always talking about Stephen King and why his books resonated so much with us. स्टीफन किंग डफर ब्रदर्स के लिए हमेशा से एक इंस्पिरेशन रहे हैं, और स्पीलबर्ग भी। The two Stevens are the biggest influence for us, so we've talked a little bit about Stephen King, and then there's Steven Spielberg, who you may have heard of. There was a lot of imagery in season 2 that evoked Close Encounters of the Third Kind, particularly the sequence where Barry is kidnapped. जो कि उनकी इनिशियल स्टोरी में रिफ्लेक्ट भी कर रहा था। शो का नेम ओरिजिनली मॉन्टॉक था, जो कि सेंट थी मॉन्टॉक न्यूयॉर्क में। ये एक फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अराउंड है, जिसको सब प्रोजेक्ट मॉन्टॉक के नाम से जानते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वह गवर्नमेंट सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रही थी 1989 के अराउंड, जिसको इस सीरीज में अडेप्ट भी किया गया है, जो कि पूरे हॉकिंस लैब का सिनेरियो है। और यहीं पर स्पीलबर्ग की मूवी जॉस भी बनी थी। तो इसी रीजन ने डफर्स ने इस जगह को चूज किया था, लेकिन फिर उनकी कुछ डिस्कशंस के बाद उन्होंने इस जगह को चेंज किया और फिक्शनल टाउन हॉकिंस को दिखाया। और जब लोकेशन चेंज हुई तो उन्हें फिर से एक न्यू नाम के साथ जाना पड़ा, जो कि अगेन स्टीफन किंग की नोवेल नीडफुल थिंग्स से सिमिलर था। फाइनल पिच के लिए उन्होंने 1970s और 80s की काफी मूवीज से इंस्पिरेशन ली, सच एज E.T., क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड, पोल्टरगाइस्ट, हेलरेजर, स्टैंड बाय मी और काफी सारी। अब इतने अर्ली डेवलपमेंट और डिस्कशंस के बाद बारी आती है राइटिंग की। When we were starting out and struggling,
so much of it was because we were chasing the trends. We were reading Deadline, or I guess it was like, Nikki Fink at the time, and it was like trying to figure out what did the industry want, what did people want, what was hot right now, and that just led to bad scripts. स्ट्रेंजर थिंग का आइडिया 2013 में आई प्रिजनर मूवी से था, जहां एक छोटी बच्ची की किडनैपिंग हो जाती है और पुलिस के कुछ ना करने पर उसके फादर को उसको खुद ढूंढना पड़ता है। डफर्स इस आइडिया को एक्सपेंड करके 8 घंटे की एक सीरीज बनाना चाहते थे, बट वो इसको चाइल्ड लाइक सेंसिबिलिटीज की तरह एक्सप्लोर करना चाहते थे, जहां वो एक गेम के थ्रू एक ऐसे मॉन्स्टर को इंट्रोड्यूस कर सके जो सुनने में काफी अनरियल है। और मॉन्स्टर को स्टोरी में फिट बैठाने के लिए उन्होंने साइंस एक्सपेरिमेंट जैसी चीजों का यूज किया, जो कि 80s के टाइम बहुत हो भी रही थी, जैसे कि प्रोजेक्ट MK-Ultra, जो कि एक इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम था CIA का। और इस तरह से उन्होंने रियल और फिक्शनल इवेंट से इंस्पायर होकर इस कहानी को लिखा और 80s से रिलेटेड सारे पॉप कल्चर्स को भी इंक्लूड किया, जैसे कि स्टार वॉर्स, साइलेंट हिल, स्टैंड बाय मी, डार्क सोल्स, इसके अलावा काफी सारे जो कि हमें थ्रू द शो देखने को मिलते ही हैं। अब राइटिंग पूरी होने के बाद बारी आती है कास्टिंग की। अब कास्टिंग के लिए डफर ने जो सबसे पहली चीज करी वो था एक कास्टिंग डायरेक्टर को हायर करना। We have to find the right kids or this is not going to work. So I think the first thing we actually did, the very first thing, money that was spent on the show, was to get Carmen involved and get her to start looking for these kids. Hi, my name is Carmen Cuba, and I'm the casting director on Stranger Things. You can't find a better group of kid actors than we have in Stranger Things. We were looking for something that felt different, something that you hadn't seen on television. We made a real effort to find kids that could embody the idea of being an outsider. With the actors, with the kids especially, it was about authenticity. And these kids felt like genuine kids. Everybody's different. There is no two of the same thing, and that's why that chemistry is so unique, and I think that's why that chemistry is at the heart of what people love about Stranger Things. कार्मेन क्यूबा ये चाहती थी कि जो किड एक्टर्स हैं वो कोई रैंडम बच्चे ना हो जिन्हें एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। Very early on, the Duffers and I discussed that these parts were not likely going to be able to be pulled off by a kid who didn't have some experience. So while some of my process involves, being out in the world and seeing a kid that looks a certain way and, sort of talking to his parents and saying, hey, does your kid want to act? This was not going to be that, because it was going to be such hard work. It was going to be every day for months on end and very specific dialogue. So that was helpful, because from the very beginning we were like, okay, no sort of street casting for this. इसके बाद उन्होंने थिएटर एक्टिंग स्कूल्स में ऑडिशन स्टार्ट किए और फाइनल बच्चों की एक लिस्ट बनाई, जहां वो 1986 की स्टैंड बाय मी की लाइंस का यूज करते हैं। I'm 10 years old. Am I weird? It's just sometimes I feel it. I don't know, like I'm stuck. Noah's audition was really special because it really informed our need for finding somebody who was young and innocent, but who had a strong charisma that would keep the viewers interested in why these kids were so dedicated to finding him, because he doesn't actually show up that much in season 1, but we knew that he needed to really carry season 2. So we were looking for a lot from this character, and he had experience on stage, just shot a film with Spielberg, really just brought it every time we called him in. So it was very exciting to see this first tape and to know that we would have him continue on in the process with us. My name is Millie Brown. I'm 11 years old. You can't see. I can see it. I saw them. That clip of Millie is also very memorable because we had her do the scenes first prior to this. We could tell that she could cry, but she hadn't quite done it. And the Duffers just asked if we could have her try it again and sort of see how emotional she could get with it. And obviously she got very emotional, and it was actually shocking that someone that young could do that. And another thing about Millie during the audition process is that she's British, and she did everything, including the Skype with the Duffers in an American accent. So we sort of forgot that she even was British. So she's pulling all of that acting off while also doing an accent. And at that young age, it was very impressive, as you can see on the series. Hi, I'm Finn Wolfhard. I'm sick. I'm late. I'm 4'11". I'm 12 years old. Nancy, listen to me. What the hell, Mike? Listen. Do you remember 2 days ago with them had your trick?
when it looked like my Millennium Falcon was really flying. Finn's audition was fun because it was done from his bed while he was in the middle of being super sick. None of that showed. You could tell he had energy and life and was really excited to play the part. No, I'll prove it. Most excellent promise you can make. Swear it! Okay, now close your eyes. And had sort of the same adventurous, playful spirit as his character. So that was very memorable about that audition. Hi, my name is Caleb McLaughlin. I'm 13 years old. Listen! Except I didn't tie it to a string. It was actually flying. This could be the most excellent promise you can make. Open. Caleb was fantastic. He's somebody who'd been on Broadway. We knew he had experience, and he just brought sort of an energy that the other kids fed into. All of them together have a very distinct energy and personality that create this friend group, and we saw that immediately from his very first audition. My name is Gaten Matarazzo, and I'm 12 years old. This is probably the most serious, most important thing ever. Swear first. The most excellent promise you can make. Just stand over there, Nancy. You're not coming out until your eyes are closed. Okay, they're closed. Open. I have absolute power. Say it. You couldn't have predicted or sort of sought out someone like Gaten. So he was an excellent surprise. What he brought to the character was not what we imagined, and it also made us realize that we didn't even have any idea what it could be until we met him. फिर कार्मेन क्यूबा जॉयस के रोल के लिए विनोना राइडर को रिकमेंड करती है, जिनकी सिर्फ एक कंडीशन थी, अगर बीटलजूस का सीक्वल बनता है तो उन्हें स्ट्रेंजर थिंग्स से ब्रेक चाहिए होगा उसके शूट के लिए, और जिसके लिए डफर्स मान भी जाते हैं. When I first read the script, I definitely felt this pull towards Winona, and it felt like the combination of kids with her as a mom was a winning formula. And she did not audition. She just met with the Duffers and they talked through it. And I think it was very surprising for her that she responded to the material and to them, but I just felt like she would have a connection to it and to them, even though it was just a guess on my part. I'm happy that it was a good guess. और हॉपर की कास्टिंग कार्मेन क्यूबा खुद करती हैं, जहां वो उनका ऑडिशन लेती हैं न्यूयॉर्क में. David is someone I've been watching for years. You know, for me, as much as I love the famous person that he was always in a scene opposite, I always found myself looking at him, watching his performance, and just sort of as a casting director, hoping that one day I would have something where he would be the famous person in the scene opposite someone less famous than him. And this really was the perfect opportunity. And he auditioned for me in a, tiny room in New York City, and he's acting. And immediately, as soon as I sent that audition off to the guys, I knew he was our hopper. अब सबकी कास्टिंग के बाद बारी थी फिल्मिंग की. अब फिल्मिंग स्टार्ट होती है नवंबर 2015 में, और फिल्मिंग के लिए डफर्स लॉन्ग आइलैंड को चूज करते हैं ताकि वो मॉन्टॉक का कॉन्सेप्ट यूज कर सके. लेकिन जब फिल्मिंग का टाइम आता है तो वहाँ शूट करना काफी मुश्किल था बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर, जो कि 3 डिग्री से लेकर 14 डिग्री होता है टिपिकली. फिर उन्होंने अटलांटा और जॉर्जिया में लोकेशंस को स्काउट करना स्टार्ट किया, और उन्हें ऐसी काफी लोकेशंस मिली जो उन्हें उनके बचपन की याद दिलाती थी, जहाँ वो फिक्शनल टाउन हॉकिंस का नैरेटिव सेट कर सके. शेड्यूल के हिसाब से फिल्मिंग स्टार्ट होती है नवंबर 2015 में, जो मेनली अटलांटा और जॉर्जिया में थी, और जैक्सन सिटी जो कि जॉर्जिया में है उसको एज अ बेस यूज किया जाता है हॉकिंस को दिखाने के लिए, और जॉर्जिया मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट को यूज किया जाता है एज अ हॉकिंग लैब, जो कि वन ऑफ द मेन लोकेशन थी पूरे शो. इनिशियली डफर्स ये सारे एपिसोड डायरेक्ट करने का प्लान करते हैं, लेकिन फर्स्ट 2 एपिसोड डायरेक्ट करने के बाद उनकी एडिटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना, 3rd एंड 4th एपिसोड के लिए प्रिपरेशन करना, और उसके साथ साथ 6th एंड 7th एपिसोड को लिखना, ये सब काम एक साथ करना उनके लिए हेक्टिक हो रहा था. तो इसीलिए प्रोड्यूसर शॉन लेवाई को लाया जाता है एपिसोड 3 एंड 4 को डायरेक्ट करने के लिए. लास्ट एपिसोड तक आते आते डफर्स थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था ये क्रू की लिमिट को पुश कर रहा है. लास्ट एपिसोड का प्रोडक्शन सबसे डिफिकल्ट था, जो काफी दिन तक चला बहुत सारे एफर्ट्स के साथ, और शो में स्नो को दिखाने के लिए 20 टन आइस शिप की जाती है फ्लोरिडा से, और पहला सीजन रेड एपिक ड्रैगन से शूट किया गया था. अब फिल्मिंग को पूरा होने में टाइम लगता है 6 महीने, जो कि एंड होती है अप्रैल 2016 में. अब फिल्मिंग खत्म होने के बाद बारी थी VFX की, एंड स्टार ऑफ द शो डेमोगॉर्गन. शो में काफी सारी चीजें डफर्स ने प्रैक्टिकली अप्रोच की थी, जैसे कि 90s लुक, जिसे कैप्चर किया गया था 1980s की फिल्म स्टॉक को स्कैन करके, और अपसाइड डाउन के लिए भी सेट डिजाइन किया गया था, और पार्टिकल इफेक्ट्स के लिए फैंस और डस्टी थिंग्स जैसे फेदर का यूज किया गया था. Inspired by what it was like when they went on the planet in Ridley Scott's Alien, and then we even have an egg there
the Demogorgon egg, which is inspired by what they discover on the planet in Alien. And that egg was real. And in season 1, especially, all the spores, the spores blowing through the air, that was all real. We were blowing them around. We had David and Winona walking around in those suits in the forest. It was old school, just blowing these basically little tiny feathers in their faces. It was a lot of fun for them. बाकी काफी चीजों के लिए VFX की लेयरिंग थी, जो कि एक कॉमन कॉम्बिनेशन होता है फिल्म मेकिंग में, जहां प्रैक्टिकल और VFX का यूज होता है कॉम्प्लीमेंट्री के साथ और जिससे चीजें देखने में अच्छी लगे। अब इसके बाद बारी आती है डेमोगॉर्गन की। अब डेमोगॉर्गन के लिए प्रैक्टिकल और VFX दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया गया था और एक प्रैक्टिकल सूट बनाया था जिसके अंदर एक आदमी था। The whole post-production office is just filled with visual effects people now, which is a whole new experience from before. There was just one guy that was only there part-time. So it's like a huge... Are you serious? Yeah, well, and also we weren't, even season 1, we weren't intending to use it at all because we wanted it to be all practical and a kind of suit, and that affected the design of the Demogorgon and everything. So it was a dude in a suit on these mini stilts, Mark all like, and like he's lubed up from top to bottom. Lubed? He's lubed up with like viscous. Classic Saturday night. I got it. But like he got really slippery, so we're shooting like scenes where like he has to come through the wall. He's like flailing. So very quickly we realized, okay, so practical isn't always going to work. And on season 1 we kind of went, what, 50-50 practical versus digital? लेकिन सूट को हर जगह यूज कर पाना ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था उनके लिए, तो इसके लिए वो हायर करते हैं एरन सिम्स क्रिएटिव स्टूडियोज को। So actually the Duffer Brothers, they originally came to us for the creature designs for the Demogorgon, but it ended up turning into a lot more than that. We ended up helping them really design out the whole world, the Upside Down. The Demogorgon specifically was really cool, and when we jumped into the design process, they had some kind of specific requirements. Basically, there wasn't that much description in the script. Requirements really were that it was going to be a biped. It's actually going to be humanoid, very skinny, very thin, and no face. What we ended up coming up with was this really interesting concept where the head kind of flowered open. वेल ओरिजिनली डफर्स ये चाहते थे कि डेमोगॉर्गन पूरा प्रैक्टिकल हो, लेकिन एक VFX स्टूडियो को हायर करना उनके लिए काफी प्रॉब्लम सॉल्विंग था क्योंकि उससे उनकी काफी सारी चीजें इजी हो गई थी और इसकी वजह से हमें बेस्ट वर्जन देखने को मिला डेमोगॉर्गन का। अब VFX और CG के बाद बारी आती है म्यूजिक की, जो कि एक बहुत रैंडम था, एक email. Approach to do the music for Stranger Things. It was a very exciting random email from the directors, just kind of telling us they liked the music of our band. They had been using it in a mock trailer for the show. They sent us the trailer that had one of our songs called Dirge. It's the last track on our first LP. And they decided who was going to do the score to this TV show we're going to work on. Let's ask these guys who were using their music currently. जहां पर डफर्स ने माइकल स्टेन और काइल डिक्सन को ट्रेलर भेजा था उनके किसी म्यूजिक के साथ। अब डफर्स की तरह ये भी काफी 90s म्यूजिक से इंस्पायर्ड थे। We have tons of influences. I mean, we grew up listening to Aphex Twin, Autechre, and Bogdan Rudzinski. All the experimental side of pop electronic stuff. I probably watched Big Trouble in Little China 100,000 times. The Keep, which Tangerine Dream did the score to this early Michael Mann film. The music in that movie is incredible. Ex Machina was really cool. Same with Annihilation. I don't think as an artist you can try to ignore or act like you're not influenced by stuff. और जो थीम सॉन्ग था वो सिर्फ एनालॉग गियर का यूज करके बनाया गया। This is my workspace with most of my equipment. I guess you guys wanted to know a bit about the theme song. Misconception, everyone thinks that the little arpeggio was written on a Juno, which I don't even own. And it wasn't an arpeggio, it was played by hand. And it was this guy. That's doing the main sequence. This is what played the bass line. It's a SH2, very good, aggressive kind of bass line. Doing a little self-resonating filter to the heartbeat, the like thump, da-dum, da-dum. Prophet 5 is in there, doing some kind of like little pad, little piano kind of tone. Tape echo is like all over everything. We love tape echo. There is 2600 doing a lot of sound effects. The day that he bought that synthesizer,
He brought it over to my house, like, let's make a big drum sound. And so we did that, and then we had that recording way before Stranger Things was happening. And then it ended up making it into the score, and we ended up recreating it to make it fit with the scene. But it's funny that literally the first thing ever recorded once he bought that made it into the soundtrack. The monster, like the upside down. It's the on. That was actually just sequenced on one of these like step sequencers. The notes are weird because it's analog, so you can fine tune like between notes. It's kind of hard. Stuff you couldn't play on the keys because the tuning is microtonal. I don't understand. Hiding. This one has this piece of tape on it because that had the monster theme on it. I was scared to change the knobs, so I put this piece of tape on it and didn't touch it for like a year, which sucks because it's a really good thing to use. Because I want to use it. It's a really good thing to use. When scary things are happening, there's like kind of like a big bwomp, like a big kind of tuba sounding hit, and that's the 2600. If you're making music or doing any kind of art or whatever, and you're enjoying it, just keep doing it. Because we were in a band for like 10 years. We didn't expect anything to happen. We were gonna keep making music anyway because we like doing it. And then one day we got this random email that changed our lives completely. So if you like something and it makes you happy, somebody else probably does too, they just need to find it. पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट होती है रिलीज से सिर्फ एक वीक पहले, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉर्मल है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 नेटफ्लिक्स पर रिलीज होता है 15 जुलाई 2016 को, जिसमें 8 एपिसोड थे जो कि अप्रॉक्स 1 घंटे के थे, और ये एक मैसिव हिट था जिसकी 14.7 मिलियन व्यूअरशिप थी, वो भी सिर्फ 45 डेज की, सिर्फ यूएस में। और वर्ल्ड वाइड भी लोगों ने इस शो को काफी पसंद किया था, लेकिन काफी लोगों ने इसे बेकार भी बोला बेसिस ऑन की एक कॉपीड शो है जो बस इंस्पिरेशन और नॉस्टैल्जिया के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन पर्सनली मुझे ये शो काफी पसंद आया, जो इसका 90s का रेट्रो थीम था और इतने फन कैरेक्टर्स, एक साइंस एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा मॉन्स्टर जो पहले बस एक गेम था और बाद में रियलिटी।